So on page 16 in the English chanting book, we'll just do the evening chanting in Pali, and then afterwards we'd like to do what we call Paritta chanting, recitation from various protective verses that are the classical protection chants. In the white chanting book, page 16, every other page is there than just the Pali, or you can use in the blue, just chant the part that's in Roman letters for the evening chanting. Yo so bhagava arahang samma sambuddho swakhato yena bhagavata dhammo supatipanno yassa bhagavato sāvaka saṅkho Dhammayang bhagavantang satamang sasaṅkhaṃ ime hi sakkare hi yatarahang aropite apipochayama sadhuno bhante bhagava suchira parinibbutopi Pachimma janathanukampa manasa ime sakkare dukkhathapannakara buddhe patikanhatu amhakandi karattang hitaya sukhaya arahang samma sambuddho Swakhato bhagavata dhammo dhammang namasami Andamayang buddhassa bhagavato pubbapha kanamakarang karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Handamayang buddhanusattinayang karomase Tangko pana bhagavantang ewang kalyano kittisato apukhato Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vincha charana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisarama sarati sattha deva manussana buddho bhagavati Handamayang buddha pituting karomase Buddhawarahantawaratati kunati yuto Suntha piññāna karuna hi samagatato Bodhe siyo sujanatang kamalang vasuro Vandhammahang Dhammāranang sirasa jinentang Buddhoyo sappapaninang saranang khemamuttamang
ปัตถมานุสติทานังวันดามิทังสิเรนังบุตธาสาสมิทาโสวะบุตโธเมสามิกิสสโรบุตโธดุขขัสสกาธาจาวิทาธาจาหิทัสสเมบุญทาสาหังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันดันโทหังจาริสามิบุญทาเสวสุโพธิทังนัตถิเมสารนังอัญญังบุญโธเมสารนังวรังเอเทนะสัจจวาเจนะวัฏเทยังสัทธุสาสเนบุญทังเมวันธมาเนนะยังปุญญังภัสสุทังอิทังสัพเพปิอันธารายาเมมาเหสงทัสสะเทจะสากายเยนะวาจายวัจเจทัสสวามบุตเทกุกมังภกตังมายายังบุตโธปฏิกันอาตุอจายันทังกาลัมทะเรสังบาริทงบาบุตเทหันดมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวากขาโทภควตาธัมโมสันดิทธิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานัยโกปัจจัตทังเวทิทัปโปวินยูหิติหันตมยังธรรมาพิธิทิงคารมาเสสวาคาทาทาติกุณายโยกาวเสนะเสโยโยมัคคภัคคภาริยัตถิวิโมคเปโตธัมโมกุโลกภัทนาทัทธาริธาริวันธรรมหังธรรมหารังบารธัมมเมตังธัมโมโยสัพพพานีนังสารนังเขมมุตตมังดุติยานุสติทานังวันดามิทังสิเรนังธัมมาสาสมิทาโสวะธัมโมเมสามิกิสสโรธัมโมดุขขัสสกาธาจาวิทาธาจาหิทัสสเมธัมมาสาหังนิยาเดมิสาริรันชีวิตันจิตังวันดันโทหังจาริสามิธัมมาเสวสุธัมมทังนัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเทนะสัจจวาเจนะวัฏเทยังสัทธุสาสเนธัมมังเมวันธมาเนนะยังปุญญังภัสสุทังอิทังสัพเพปิอันธารายาเมมาเหสงทัสสะเทจะสากายเยนะวาจายวัจเจทัสสวะธัมเมคุกมังภกตังมายายังธัมโมปฏิคันหาตุอจายันทังกาลันทะเรสังวาริทุงวัฏธัมเมหันดมยังสังฆานุสตินยังคารมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสปุกกลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยภาหุเนยโยดักขิเนยโยอัญจลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติห
หันธรรมยังสังฆาภิกิติงกโรมาเสสัทธรรมโจสุปฏิภาติโกนาทิโยโทโยทัปปิโทอริยปุกกลสังฆเสโทศีลาทิธรรมภาวราสยกายจิตโตวันธรรมหังธรรมาริยานัคขนังสุดสุดทังสังโฆโยสัพพพานีนังสารนังเกมมุตตมังทัตติยานุสติทานังวันดามิทังสิเรนังสังฆาสาสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆดุขัสสะขาทาจาวิทาทาจาหิทัสสะเมสังฆาสาหังนิยาเดมิสารีรันจีวิทันจิตังวันดันโทหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเทนะสัจจวาเจนะวัฏเทยังสัทธุสาสเนสังฆังเมวันธรรมาเนนายังปุญญังภสุทังอิทาสัพเปปิอันธารายาเมมาเฮสุงทัสสะเทจะสากายเนวาจายวาจิตสวะสังเคกุกมังภคตังมายายังสังโฆปฏิคันหาตุอาจายันทังกาลันทะเรสังบริทังวาสังเคविपत्ति पटिभाया सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाया परित्तम ब्रूथ मंगलम विपत्ति पटिभाया सब संपत्ति सिद्धिया सब भय विनाशाया परित्तम ब्रूथ मंगलम विपत्ति पटिभाया सब संपत्ति सिद्धिया सब रोगा विनाशाया परित्तम ब्रूथ मंगलम. Okay, so that is the formal request for Paritta chanting, and what Parittas are both blessing chants, protection chants, and many are based on some of the actual teachings, suttas from the scriptures, Mangala Sutta, Ratana Sutta. Others are recollections of the Buddha, or Paritta is for sickness, and it's a recollecting times when the Buddha was healed through the power of the factors of enlightenment, or others through the Buddha's advice. So there's a variety of chants, and particularly this is our last evening, and we wanted to do something as a blessing for the center and a blessing for all the people who have come and put forth the effort to join and support this whole event. It's something to really delight in, and the sangha sort of is
call the devotees. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma Tang saranang gacchami Dhammam saranang gacchami Sangham saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammam saranang gacchami Dutiyampi Sangham saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammam saranang gacchami Tatiyampi Sangham saranang gacchami. Ocaku mamo hamalapagado sam Vamundo sugato imondo malasapasa vinimo jayando mapesike manganatang vinayang buddhang walandang vilasanamma milokasanatanya vinayakanya tande yasade jayasede hotu sambanalaya javina samendra Dhammo jajoyo viyata sasadu dase siloka Savisuddhi makang niyani Dhammandala sadhari sata vaho sandikalo suchinno dhammang walandang vilasanamma mimoha pandalang upasannadahang dande jasate jayase dihotu samandala Ya Chavina Samendra Sadhamma Sena Sukatanu Goyo Loka Sapa Saceta Sando Sayang Handiniyo Jako Jasawaka Dhammang Vedita Galoti Sangang Walandang Nilasanamami Buddha Buddha Samasila Deting Nande Jasate Jayase Dehotu Sabha Dharlaya Chavina Sumedho Namo Arahato Samma Sambuddha Samahesino Namo Buddhamadhamma Sasavakata Sevate Nidhanamo Mahasangha Sati Visuddhasila Detino Namo Homadhaya Landa Ratanathaya Sasadukang Namo Om Akadita Sata Savatu Taya Sapi Namo
กาลาปัมบาเวนวิกาจันโนปานวานโมกาลานุมาเวนสวัติโหตุสัมปันดานโมกาลาสเทเชนเวเดนมิโหมิเอจวาเสวนาจมังกลมุตตมังมติโลปันเดสวาโสจะพมเบจะกัตปุญญาตาหัตสัมมาปณิติจเอตมังกลมุตตมังบาหุสาจัญญเสปัญญเวนโยยสุเสกิโนสุภาสิตาจยาวาจาเอตมังกลมุตตมังมาตาปิตุปาตานังโหตดาลาสสังฆโหอนาคุลยกรรมันดาเอธามังกลมุตตมังดานันจะดัมมจริยาญญาตกานันจะสังฆโหอนวัจจานิดัมมนิเอตามังกลมุตตมังอาลเตเวลเตปาพามาจปานยสัญญโมอัปปมาโดจะดัมเมสุเวตามังกลมุตตมังกาลโวจะนิวาโทจะสันโดเตจะกตัญญุตากาเลนะดัมมะสวนังเอตามังกลมุตตมังคันเดจะโสวจาสดาสมนานะยังดาสนังกาเลนะดัมมะสาขาชาเอตามะกลมุตตมังนโปจะพรหมจริยัญญะอริยสัจจานันดาสนังเนมบานสัจจกิริยาจเอตามังกลมุตตมังโพธาสนังเมหิเจตังยาสนกรรมติยโสกังเวลจังเกมังเอตามังกลมุตตมังเอตาดิสานิขาตวานสัมบัตตมปราจิตาสัมบัตตโสเตงอาชันเดทันเดสังมังกลมุตตมันเดยังกินเยเวนดังอินดาวาหุรังวาตันดังบะเนตังเอเทนะสัจเจนะสวัติโหตุกยังวิรากังอมตังบะเนตังยันดายังกาสาคิโยมุนีสมาหิโทนะเตนะดัมเมนะสมาดิเกญญิดัมมิดัมเมรัตนังบะเนตังเอเทนะสัจเจนะสวัติโหตุยังบุเตโตปริวันไนสุจิงสัมมาดิมานันดาริคัญญมาหุสัมมาดินาเทนะสัมโมนะเวจติอิดัมมิดัมเมวัตตังมะเนตังเอเทนะสัจเจนะสุวะนิโหตุเยโภคลาหะสตังวัสสะตาจาตาลิเยทะนิโยกานิหนดิเทดาคินายาสุกตาสสาวกาเอเทสุเดนานิมหาปลานิดัมบิสังเยวัตนังมะเนตังเอเทนะสัจเจนะสวัติโหตุเยสุปโยตามนัสสาดัลเลนะนิกะมิโนโกตัมมสาสนามิเทปาติบาตาธรรมทังวิกายลาดาบุญาเนปุติงบุญญมานะทิดัมมิสังเกรัตนังมะเนทังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกีนังโบราณังนวังนาติสัมภวะเวลาตเจตายติเก
ปวัสสมิงเนกีนาบิจาอวิโลลิจันดานิบันติรายตายัมปฏิโกนิธัมมิสังเกรัตนังมณีทังเอเทนะสาเจนะสวัสดิโหตุคาลนิยมาตกุสเลในอันดังทันดังบดังอภิสัมเมยสาโกโหโจจะสุโหโจจะสุวโจจะสมุนโดอนัตติมานิสันโดสโกจะสุปโรจะอาปะเกโจจะสะลาวกโวติสันดินริโยจันเยนวิญโยภะเรโยภวะเดยงสุขิโนวาเคมิโนโหนตุสัมเมสัตตาภวันตุสุขิทาตาเยเคจิปานบุตาติตัสสาวาตาวลาวาหันวเสสาดิกาวายเยมหันดาวามาจิมาลาสกาหนุกทุลาดิตาวาเยจะหะเดตาเยจะดูเลวัตันวิดุบุตตาวาสัมภเวสีวาสัมเมสัตตาภวันตุสุขิตาตานปโรภรังนิโกเมตนาติมันเยสักกาตจินังเย็นยิมายาโอสันนาปฏิกสัญญานัญญมัญญาสะโดกเมจยมาทายตานิยปุตตังอายุสาเหกปุตตมนุลาเกเหวัมปิสะสัมโพเทสุมาณสัมภาวะเยอปาริมาณังเมทัญญสามโลกัสมิงมาณสัมภาวะเยอปาริมานังโอดังอโดจเดริยัญญสัมมาดาสวิกัตเมโดเอตังสเตงเรทัยบรามเมทังวิหารังอิดมะพุเนเทนยานุปกรรมสีลวาดาสเนนะสัมบานุกาเมสุเวเนยเกตังนาหิจาดุกาบเสยมุนเลเกติทุกขปัตตาจเนลุกาบายาปัตตาจเนมบายาโสกาปัตตาสัมปดังบุญญสัมปดังสัมเบเดวะหนุโมทันตุสัมปสัมปติเสติยาดานังดาดันตุสันดายสีลังราคันตุสัมปดาภาวนาเบลตาตุขาชันตุเดวตากถาสัมเมบุญดาบาลาปะบัญเยคานัญญยังบาลังอรหันดานัญจเทเจนะลาคังบันดานิสัมบาโสอิติปิโสภะคะวะอะระหังธัมมะธัมโมโดเวชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสรัมมตาเนวมนุสานังบุญโตภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆหุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอดิตังยัตตาลิปุริสยุคานิอัตตปุริสโภคลาเยสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญญลิกรณิโยอนุตตรังบุญญาเกตะโลกัสสติมหาการุณิโกนาโอวิตายะสัมปปานินางโมเรตวาปารมีสัมมาปะโตสัมโพธิโมตตมังเอเตนะสัจจวาเจนะโหตุเตจยมังกลังยยันโนโพธิยาโมเลสักยานะนันเดวาดโนเอวังนวังวิจโยโหหิจยะสุจยมังกเลอปราจิตปาลังเอเสเสปตวิโปกเลอภิเสเกสัมบมุนดานังอาคาปะโตปัมโมนาติสุนาคตังสุมังกลังสุปปาตังสุติตาสุขโนสุโมโหโตจะสุเยดังบรมชาลีสุปันดากินะกายกรรมังวาจากรรมังบัณฑากินังบัณฑากินังบัณฑกรรมังบัณฑิติเทปันดากินาปันดากินานิฆาตัวนลปันดาเทปันดากินเนภวตุสาบมังกลังราคะนุสามเดวนาสามบุญญานุภาเวนัสตาสาปดัมมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเทภวตุสาปมังกลังรากันตุสาพระเทวนาสาปสังฆานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเทSahampati Katanjali Andhavaram Ayachat Santiddha Satta Aparakha Jatika Desetu Dhammam Anukampimam Prajam Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhaṃ Dhammaṃ Sanghaṃ Namassāmi
So as this is the last evening after 4 days of meeting together, gathering together, practicing together, there's a few themes I'd like to tie together. I think the first is when I first arrived, I had wish was for this to be an occasion to bring the presence of sangha to you all, and to that the sangha refuge being represented, and to try to give a different model than an individual teacher or an individual representative of the Buddhist dispensation, but a communal example of the because that sense of sangha is so much in terms like Ajahn Chah made many great contributions through his personal presence and his personal example, but I think his greatest contribution to both to Thai Buddhism and to the West is the model of sangha as a vehicle for practice and training and for living a life of Dhamma. So that hopefully there's been a bit of a flavor of that, and that having a group of us here, and and looking to the long term. Your aspiration is to establish a vihara, a monastery of some sort, a monastery of some sort, somewhere, sometime. Holding that sangha model is very important, because it's a way of supporting each other, and oftentimes it's like I've spent the last over 20 years in California and in America, and it's very new. Buddhism and monastic monasteries are very novel kind of phenomena there, and oftentimes they'll ask, well, what's the benefit of a monastery, of living in a community, having a community? And I said, well, one of the benefits is, we're not all. It never happens that when you're living together as a group and as a community, that you're all lazy, miserable, and depressed all at the same time. So there's always somebody who's kind of getting it together, and helps to carry us all on, and it's kind of
how do you say, flippant, but there's a truth behind that, in the sense that, because if you think that, and most of you have practiced for some time, and you know very well that you're not inspired all the time. And you're not peaceful and together all the time, and that and if you think the monks are peaceful and together all the time, this is where it's good to have a sangha. This is very realistic. So that sense of really taking responsibility for both the harmony and the focus of the group, and to support each other, and similarly with, just as a community, a communal effort to have sangha as models, examples, and we have structures which are very helpful and supportive for our as a container for us, and they're very good models and examples for the lay community, and so it's mutually beneficial. So that sense of relying and supporting each other, and so the sense of Kalyanamitta is a relationship of Kalyanamitta, being drawing close to good spiritual friendships. It's a very important basis. अंतिम शाम है, 4 दिन तक हम लोग मिले हैं, साथ बैठ के साधना की है, धर्म चर्चा की है, और जो भी कुछ थीम्स हम लोगों ने इतने दिनों तक डिस्कस किए, मैं आज उन सब का समावेश करना चाहूँगा। पहले दिन आपने लुंग पोर लियम की विश के बारे में बताया कि हालांकि वो बीमार हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर भी एक पूरा संघ जाना चाहिए, क्योंकि संघ की शरण हम सब लोग लेते हैं, और एक इंडिविजुअल आदमी जाए भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, या एक संघ जाए, उस हम आपको उस संघ वाला मॉडल भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे अजान चाह उन्होंने संघ का महत्व समझाया कि एक संघ जो है, एक किस तरह से एक कम्युनिटी में इकट्ठे रह सकते हैं और ग्रुप रहने का क्या लाभ होता है। आप लोगों की लंबे आपकी एस्पिरेशन है, आपकी इच्छा है, धर्म इच्छा है कि यहाँ पे एक कभी कहीं पर किसी समय एक मोनेस्ट्री बन जाए, तो हम सब उसको सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हैं। अपना उन्होंने दृष्टांत देते हुए बताया कि पिछले 20 साल वो कैलिफोर्निया में जो अभयगिरी मोनास्ट्री है वहाँ पे थे, और वो मोनास्ट्री कैलिफोर्निया में एक नई सी चीज़ थी, और लोग पूछते थे कि इसका क्या बेनिफिट क्या है, आप सब लोग इकट्ठे समय पे मिजरेबल हो, एक ही समय पे परेशान हो। तो ये हल्की सी बात लगती है, लेकिन इसमें एक सच्चाई भी है, क्योंकि आप सबने भी साधना की है, तो आपको मालूम है कि ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा ही पीसफुल हो, हमेशा ही इंस्पायर्ड हो। कभी पीसफुल होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मॉन्क्स हमेशा पीसफुल रहते हैं, हमेशा इंस्पायर्ड रहते हैं, तो ये शायद ठीक नहीं है। तो जब हम ग्रुप में रहते हैं तो एक दूसरे का
हारमोनी बनाने में सहायता करते हैं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं। और जो संघा है वो एक कम्युनिटी है, एक मॉडल हम प्रस्तुत करते हैं समाज के लिए कि किस तरह से हम आपस में हारमोनियस भी रह सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, और ये जो गृहस्थ एक दूसरे के प्रति रखते हैं। Another aspect of the say sangha as a vehicle for practice is the learning how to use different aspects of our life. Say as monastics, then we learn how to use different aspects of our life and incorporate it into a training in mindfulness and discernment, and so that it's a cultivation of the and be a part of that from time to time, or to draw on the example of that, and then being able to integrate different aspects of daily living into Dhamma practice. Sometimes it's I remember when Ajahn Chah went to America. He only went one time, and he helped to lead a retreat at the Insight Meditation Society of Barre, Massachusetts. It was now it's a very well-known and very long-established meditation center. In those days, it was still quite. It was early days, and but there was a lot of sincerity and a lot of and their model was mainly from the Burmese tradition of Mahasi Sayadaw, and being able to go in to do retreats and have that set up for retreat, and after Ajahn Chah had been there for a little while, Ajahn Chah was incredibly perceptive, and it's just his nature. And one of the things he was a couple of things he noticed right away was that one, sila was not very well. Wasn't picked up seriously, but as long as people were in the retreat center, then sort of okay. But then another aspect was that because people would come and do retreats, and then experience some peace and well-being and clarity. And then come back to Barre to do a retreat to get peaceful again. So there wasn't much continuity. And Ajahn Chah he said, people seem to be practicing like thieves. But clever, intelligent thieves. And he said, you go, sort of go out and a thief goes out and steals
but you're intelligent and clever, so you hire a good lawyer. And then you get off. And then you go back and do the same thing. So he said, it's like coming, going out, getting, feeling some of the dukkha of the world and the confusion of life. And so you hire a clever lawyer, come to have a Buddhist retreat, and Buddhist teachings, and you get peaceful and feel better. But then you go back out and do the same thing. So he said, there has to be some continuity, and I think that's the sort of the spirit of the way that Ajahn Chah taught, and the way that the sangha lives. That really, it's looking to the long term. Practice as a long term commitment. Realizing that there's no sort of just really quick and easy blazing insight and then your life has changed forever. You don't have to bother so much anymore. You got to have this commitment and a continuity, and recognize that it takes time, and having that container is very, very supportive and helpful. So the sangha vehicle. I remember one time Ajahn Sumedho coming to visit Wat Nanachat and using that idiom of just give yourself to the sangha vehicle. Just get on the bus and don't get off. It'll take you to where you're going. So that sense of the these traditional refuges. Of course, Buddha, Dhamma, people get it in terms of how important that is. But then, I think one of the things that ties it all together and holds it together is this the sense of sangha and the commitment to training, because that's when we do the chanting of recollection of sangha, the characteristics of the sangha, and this is sangha in terms of followers of the Buddha, not sangha as just say monastic sangha, because there's conventional sangha, and then there's those who follow and experience the fruits of the practice. But it's based on that supatipanno, practicing well, ujupatipanno, practicing directly, nyaya patipanno, practicing insightfully, samicipatipanno, practicing appropriately, practicing with integrity. And it's the practice that is the characteristic of sangha, and it's what we draw close to that, to the training and the practice, and support each other and encourage each other. दूसरा जो आयाम है संघ का एज ए व्हीकल ऑफ प्रैक्टिस, ये हम कैसे साधना करें और किस तरह से हम अपने जीवन के विभिन्न आयाम उसको एक प्रैक्टिस का पार्ट बना लें। तो ये जो भिक्षु संघ है, इससे ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे सामान्य कार्यकलाप होते हैं उनमें उनको भी सती, माइंडफुलनेस और प्रज्ञा, डिसर्नमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और ले कम्युनिटी भी उसमें भाग ले सकती है, उसका सपार्ट भी बन सकती है और सर्टनली उससे एक प्रेरणा ले सकती है, इंस्पिरेशन ले सकती है, एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकती है कि हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन को धम्मा प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने एक दृष्टांत दिया कि जब अजान चाह एक ही बार यूएस गए थे तो वहाँ पे इनसाइट मेडिटेशन सेंटर, जो आजकल बहुत प्रसिद्ध है, उस समय बिल्कुल शुरू के दिन थे, वहाँ पे एक रिट्रीट में उन्होंने
थोड़े समय भाग लिया था, तो देखा कि वहाँ पे काफ़ी सिंसेरिटी है लोगों में, और वो वहाँ पे बर्मीज़ मॉडल महाजी साइडो के इस तरीके से ध्यान सिखाया जाता है। और अजान चा काफ़ी परसेप्टिव थे, काफ़ी ध्यान से चीज़ों को देखते थे और बहुत जल्दी समझ जाते थे क्या हो रहा है। और उन्होंने देखा कि साधना तो कर रहे हैं लेकिन वो इतनी सीरियसली समझ नहीं आ रही। लोग जो हैं साधना करने जाते हैं, एक शिविर करते हैं, कुछ शांति कुछ अच्छा महसूस करते हैं, फिर घर जाते हैं और कुछ समय बाद फिर वहाँ वैसा का वैसा ही मन हो जाता है, बेचैन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और फिर सोचते हैं कि कब हमें अगला मौका मिले और एक और रिट्रीट करें और फिर दोबारा से पीसफुल हो जाएं। तो इस बात को देख के अजान चा ने जो कमेंट किया कि उनको लगा कि ये सब लोग एक चोरों की भांति हैं, तो जो बहुत इंटेलिजेंट चोर हैं, कि वो जाते हैं कहीं चोरी करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं और फिर एक अच्छा वकील करते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं और बाहर आके फिर वही काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो सेंटर है, जो ध्यान करने का जो रिट्रीट सेंटर है, वो एक लॉयर्स की तरह है जो उनको उस चोरी से पकड़े जाने के बाद उसे थोड़ी देर निकाल लेते हैं, कुछ समय और निकलता है लेकिन वो फिर वैसा ही करते हैं, तो फिर उसी चक्कर में आ जाते हैं। तो ये उनका तात्पर्य ये था कि साधना में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, हम सिर्फ रिट्रीट में साधना ना करें, सारा जीवन हमारा साधना में होना चाहिए। तो उनका तात्पर्य ये था कि साधना जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ये एक छोटे समय पे एक रिट्रीट करके कमिटमेंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है हमारे लिए। और ऐसा नहीं होता कि कोई शॉर्टकट हो कि जल्दी से हमको अंतर्दृष्टि मिल जाए, हमें इंसाइट हो जाए और हमारा सारा जीवन बदल जाएगा। इसमें समय लगता है और उसके लिए एक सपोर्टिव कंटेनर, एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जो आपको हेल्प कर सके, और संघ जो है वो उस तरह की व्यवस्था करता है। तो आपने एक और दृष्टांत दिया कि अजान सुमेधो जब कई साल बाद वाट पah आना चाहता है तो काफ़ी लोगों को इंस्पायर करते थे कि अपने आप को संघ को दो, सारा जीवन संघ में लगाओ। और उदाहरण ये देते कि जैसे एक बस में चढ़ जाओ और फिर उतरो मत उससे। तो उस कमिटमेंट से अपना जीवन साधना को देना चाहिए। लुंगपुर बता रहे थे कि जो ट्रेडिशनली भगवान जो 3 त्रिरत्न शरण ली जाती है, तो बुद्ध की शरण, धम्म की शरण तो काफ़ी समझ में आती है लोगों को, इम्पोर्टेंस भी समझ में आती है क्योंकि वो हमारे प्रेरक हैं और एक दूसरा हमारी धर्म का मार्ग बताता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि बुद्ध और धर्म को जो साथ में जोड़ता है, जो एक हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो संघ ही है। और जो ट्रेनिंग के प्रति कमिटमेंट है, साधना के प्रति कमिटमेंट है, वही संघ का गुण है। और ये संघ का मतलब केवल भिक्षु संघ नहीं है, जो भी सिंसियरली उस साधना को फॉलो करते हैं, वो गृहस्थ भी हों, वो भी उस संघ में आते हैं। और जब हम चैंटिंग करते हैं संघ के गुणों की, सुपटिपन्नो भगवतो उजुपटिपन्नो न्यायपटिपन्नो सामीच्य पटिपन्नो, तो वो सब प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, सीधे तरह से अन्य धर्म के मार्ग पर चलते हैं और न्याय ज्ञान के साथ धर्म के मार्ग पर चलते हैं, भली भांति प्रैक्टिस। तो ये सारी बात देखेंगे, हर जगह पे प्रैक्टिस की बात हो रही है कि वो एक प्रैक्टिस का उदाहरण देते हैं हमारे लिए, ट्रेनिंग का उदाहरण देते हैं, एक दूसरे को उस प्रैक्टिस में सपोर्ट करते हैं। इस तरह से भी हमको संघ के महत्व को समझना चाहिए और संघ की शरण को समझना चाहिए। So when we speak of say practice training with the model of sangha, say it's much broader than say just formal meditation. The way that Ajahn Chah taught it, he put a lot of emphasis on all the different aspects of again of how we live, and of course one thing that living in harmony with each other, and you know it's a nice ideal, and but it takes work for a group of disparate people to live together harmoniously.
and so that's a part of training, and that's a part of Dhamma practice. What sort of principles do we need to rely on in order to live together harmoniously, to get along, and as the idiom in the suttas, living together, mixing together like milk and water, and it's a very beautiful image, and in order to do that, there's an element of, one, there's effort needs to be made, and two, we have to let go of our own personal preferences, our personal views and opinions. It doesn't mean we have to push everything down, but you can't be trotting out all your views or your preferences and thinking that you're going to get your way. There's obviously negotiation that is required, but that's keeping that as a reminder, or foremost as a group. How do we work together harmoniously, and how do we maintain harmony? And it doesn't mean that there's not going to be ever any disagreements, but that commitment to harmony is there, and that's where when you have a shared value of the precepts and the refuges and the commitment to the principles of relinquishment and freedom from suffering, then you've got a basis for doing that. But sometimes it's easy and sometimes it's hard. So reflecting back on his life, he was a monk for some time, and then he left the robes, went back to the lay life, and writing, reflecting on his experience. And he said, tremendous. His tremendous respect for sangha and for the teachers, and particularly for Ajahn Chah. But I remember one of sometimes the feeling is when you're living together with people, like 75% or 80% of all the suffering in the world is because of the person sitting next to you. Yeah, and it's the way the mind works. We obsess, and so that being able to see the habits that we do have, and just not taking ourselves so seriously. That's where harmony can forget the goal, not to forget the big picture. And once you've got that big picture, then you've got a place to relink. With sometimes with some of the practices that we do, some people like them and some people don't. I can remember when I first was training at Wat Pah Pong with Ajahn Chah, and getting up at 3 o'clock in the morning. That wasn't a problem for me. I didn't. That was like, to get up at 3 in the morning. I'm a morning person anyway, but then to go and chant.
sort of seemed to suck all the life out of me. But then, yeah, I don't like it. But then it happens every single day, and then you start saying, oh man, I've got to live the rest of my life doing it. But then, you realize, the mind is such a whiner, so it's being able to write down, just giving yourself, and then nowadays I really enjoy chanting. And so you pick it up as a training, and you learn how to use things in skillful ways, and that's just having to. So that our daily life is, there are things that we can be putting effort into, and even if it's something that we're not, just like for myself at that point in time, something I had to get over a hump with to actually push myself, and then you start, what was the big deal? And it's actually quite a wholesome thing to be doing, and then you turn your attention in skillful ways. And as I mentioned before in one of my talks about, it's like, there is sitting meditation, walking meditation. Some people prefer walking meditation, do more walking meditation. Some people do prefer sitting meditation, do more sitting meditation. But those are parts of our daily life, and also just looking after the cleanliness of places, keeping things orderly and neat. That's for those people who have been to visit the Thailand, or gone to Wat Nanachat or Ampawan, or to Wat Pah Pong. I think that's one of the things that is striking. So, people are really looking after this place, and sangha presence. That's still something that people can be doing with the center. Is training, part of a training of looking after the center as a communal place of practice. In the northeastern dialect in Thailand, like the northeast where Wat Pah Pong is, it's a different language, different culture, and there's an idiom that if you go to a monastery, you want to see what the quality of practice of the monastery is, the monastics living there is, go to the toilets. And if you of the care that's being given, or the attention that's being paid. And family, these are things that can be incorporated, and it's just how to bring Dhamma practice, Dhamma training into quote-unquote the ordinary. Because there isn't anything ordinary about a human life. Because we're being born as human beings, having the opportunity to have this capacity to know, reflect, understand, and be
liberated, be free from suffering. This is it's like a capacity of the human condition, and it's in the one of the preliminary practices in the Tibetan tradition is recollecting the precious human birth. That's really, it's an important thing to recognize, reflect on. Yes, so that the things which we consider ordinary can be brought to life and made into a जो संघ का मॉडल है उसमें जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस होती है वो फॉर्मल मेडिटेशन जो कुशन पे मेडिटेशन करते हैं उससे बहुत विशद होती है, बहुत बड़ी होती है। अजान चा जो थे वो हमेशा एम्फेसाइज करते थे कि हम जीवन के जितने भी आयाम हैं उन सब को साधना से जोड़ना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात इस पर बहुत जोर देते थे कि हम संघ के अंदर क्या एक दूसरे के साथ हारमोनी से रह पाते हैं, प्रेम भावना से रह पाते हैं, संगीति से रह पाते हैं। ये एक अच्छा आइडियल है, लेकिन इसको कार्यान्वित करना में काफ़ी कठिनाई आती है, काफ़ी इनर वर्क करना पड़ता है, काफ़ी साधना करनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग विचारों के, अलग अलग परसेप्शंस के लोग जब इकट्ठे रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना रहती है। और यही हमारी ट्रेनिंग का ही एक भाव है कि किस तरह से हम हारमोनियसली रह सकते हैं, आपस में मिलजुल के रह सकते हैं। और उसका जो भगवान वो एक बहुत सुंदर सिमिली देते हैं कि हम जैसे दूध और पानी मिक्स होकर रहते हैं वैसे ही आपस में सब लोग एक संघ के रूप में रहें। और इसके लिए काफ़ी एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि हम जो हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, हमें कुछ चीज़ें पसंद हैं, कुछ अच्छी नहीं लगती, कुछ बुरी नहीं लगती, उन सबको ठीक से देखें, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद और नापसंद होगी तो हमें उसमें नेगोशिएशन करने की आवश्यकता पड़ती है, उसमें आपस में एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब नहीं कि हम अपनी प्रेफरेंसेस और लाइक्स डिसलाइक्स को दबा दें, हम अपनी इच्छाओं को, जो हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो बुरी लगती हैं, उनको बात ही ना करें, लेकिन सब मिलजुल के बात करें और आपस में एक नेगोशिएशन से, एक आपस में चर्चा से एक कंसेंसस पे आएँ। सबसे मुख्य बात है कि हम एक ग्रुप में रहने का एक हमारा उद्देश्य है कि हम सब आपस में हारमोनियसली रहें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपस में कभी डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, कई विचारों की भिन्नता नहीं होगी, लेकिन कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल हम अपहोल्ड करते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल हम अपने हमारे हैं कि हम किसी चीज़ से चिपकेंगे नहीं, किसी भी बात को, हर चीज़ में रिलिंक्विशमेंट का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल रखेंगे। तो ये सब प्रिंसिपल जब हम सामने रखते हैं तो एक संभव होता है कि हम अपने संघ को, अपने ग्रुप में एक संगीति से, एक हारमोनी से रह सकें। हाँ, कभी ये बात ज़रूर है, कभी आसान होता है, कभी मुश्किल होता है। जैसे आपने एक दृष्टांत दिखाया था कि हमारी कम्युनिटी में एक मंक थे, बनते थे, जो काफ़ी वर्ष रहे और बाद में खैर डिस्टर्ब होकर किया था और ले लाइफ में चले गए थे। उनकी संघ के प्रति बहुत रिस्पेक्ट थी, और बट ये भी एक भाव उनको लगती थी कि जो मेरे दुख का जो 80% कारण है वो आदमी है जो मेरे साथ बैठा हुआ है। तो ये भाव सब काफ़ी लोगों के साथ ये भाव सत्य रहता है कि हमको समझना चाहिए कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारा बड़ा उद्देश्य है दुख मुक्ति का, वो हम सबका वही उद्देश्य
अपने विचारों से, अपने जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं, जो हमारी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, उनको सामने रखते हुए उनको उनका त्याग करने की क्षमता, उनको ऊपर एक्शन ना लेने की क्षमता भी हमारे पे आनी चाहिए। कई प्रैक्टिस जो हम करते हैं, हो सकता है कुछ हमको अच्छी ना लगती हो, कुछ अच्छी लगती हो। तो बता रहे थे कि जब हमको शुरू में वाट पा पोंग में ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो सुबह 3 बजे उठना होता था। तो वो उनके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनकी आदत थी सुबह उठने की। लेकिन उनको दिक्कत ये होती थी लुंगपुर को कि वहाँ 3 बजे उठ के जाके चैंटिंग करनी है। तो लगता था कि क्या हो रहा है, और बहुत ही कष्टदायक उनको लगता था। बहुत समय तक उनको वो अच्छा नहीं लगता था। और दिक्कत जब ये विचार करते थे कि ये रोज़ हो रहा है, देखा उन्होंने, और उनको लगा कि ये सारी जीवन मुझे ये करना है, तो काफ़ी उसके प्रति दिक्कत हुई उनको उसमें शुरू के समय पे। क्योंकि मन ऐसा है कि वो जिस चीज़ के प्रति भी द्वेष भाव कर देगा तो उसको बढ़ाए रखता रहता है। लेकिन प्रैक्टिस ये रखी, दुख मुक्ति की प्रैक्टिस रखी, तो उससे ऐसी परिस्थिति है कि अब लुंगपुर बताते हैं कि मुझे चैंटिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। तो इस चेंज को भी हम अपने विचारों के चेंज को, अपने परसेप्शन को चेंज को भी एक ट्रेनिंग के रूप में देखते हैं। तो इसीलिए हम डेली लाइफ में, सामान्य दैनिक जीवन में भी पा सकते हैं। यही विचार, यही तरीका सोच कि हम किस तरह से अपने किसी खास आदत को, खास लाइकिंग को ऊपर उसे अपने उसके चंगुल से कैसे निकल सकते हैं। ये जैसे एक और उदाहरण दिया कि कुछ लोग हमारे ट्रेडिशन में सिटिंग मेडिटेशन, फॉर्मल मेडिटेशन, कुशन पे बैठ के भी ध्यान करते हैं, चलते हुए भी ध्यान करते हैं। सिटिंग मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन होती है। कुछ लोग सिटिंग को पसंद करते हैं, कुछ वॉकिंग पसंद करते हैं। और क्योंकि ये दोनों हमारे, बैठना भी और चलना भी हमारे सामान्य जीवन का भाग है, तो एक जब हम देखते हैं कि संघ में ऐसा हो रहा है, तो हम जो लोग ज़्यादा सिटिंग करते हैं उनको अच्छा नहीं मानते, जो कम सिटिंग करते हैं उनको अच्छा नहीं मानते। जिसका जैसा रुझान है वो ऐसा करता है। एक और बात जो आपने कही कि हम जो सामान्य चीज़ बताई जिसके ऊपर की महत्व देते हैं, कि हम अपने जो लोग वाट पा पोंग या वाट पा नानाचाट रत्नावन गए हैं, जो हम लोग में से काफ़ी लोग गए हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे कितनी सफाई, कितना ऑर्डरली में अरेंजमेंट रहता है, सब कुछ सफाई रहती है। जबकि वहाँ हम लोग, अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ, वहाँ जंगल में पत्ते रोज़ सैकड़ों पत्ते नीचे आते रहते हैं, और लेकिन फिर भी सारा वो क्षेत्र सब साफ सुथरा रहता है। तो सब इससे लगता है कि सारी कम्युनिटी मिलके उस स्थान को बहुत प्रेम से देखती है, उसको सफाई रखती है, उसके अंदर इंतज़ाम करके रखती है। तो बता रहे हैं कि जो ये दोनों किसी मोनास्ट्री में, किसी विहार में जाओ और आपको जानना है कि वहाँ की प्रैक्टिस कैसी है, वहाँ के साधक, वहाँ के जो भिक्षु हैं कैसी साधना करते हैं, तो आप उनके टॉयलेट्स पे जाकर देखो, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर वो साफ़ हैं तो सचमुच में ठीक साधना कर रहे होंगे। इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि इस विहार के टीचर कैसे हैं, वो जो अबट हैं वो कैसे हैं, तो आप उनकी क्वालिटी क्या है, तो जो आप उनके सामने रहें, जो नए नए भिक्षु बनने के लिए आए हैं, उनकी ओर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो जो वहाँ के अबट हैं वो कैसे हैं, कितना वो ख्याल रखते हैं अपने नए नव भिक्षुओं का। तो इस तरह से जो हमारी डेली लाइफ की क्वालिटीज़ हैं, किस तरह से उनको धम्मा प्रैक्टिस में लाया जाए। जो हम कहते हैं कि ये तो बड़ी ऑर्डिनरी चीज़ है, हमारे सामान्य ह्यूमन जीवन, मानव जीवन में कोई भी चीज़ ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि हम द वेरी फैक्ट कि हम मानव जीवन जिए हैं, ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। और क्योंकि हमारे में एक क्षमता है कि हम जान सकें, हम समझ सकें, और सबसे बड़ी क्षमता है कि हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। ये ऑर्डिनरी बात नहीं, कोई सामान्य बात नहीं है। एक उन्होंने और दृष्टांत दिया तिब्बतन प्रैक्टिस का, कि वहाँ पे जो एक शुरुआत की प्रैक्टिस होती है कि हम जो मानव जीवन है उसकी महत्व को समझें। वी रिकलेक्ट दी प्रेशियसनेस ऑफ ह्यूमन बर्थ, कितना वो महत्वपूर्ण है, कितना वो कीमती है, और समझते हैं कि हम अपना ध्यान उस ओर आकर्षित करते हैं कि जो सामान्य जीवन है वो कितना महत्वपूर्ण है।
और इस बात को ही, इस रिफ्लेक्शन को ही, इस विवेचना को ही हम अपने साधना में प्रगति और डेवलपमेंट का एक माध्यम बनाते हैं. So, on behalf of all of us, myself, Luang Por Jundee, Ajahn Chah, Ajahn Moshe, Tan Gunakalo, we have been here the last several days, and I think we're all touched by your sincerity and your commitment, and that, and I think on say behalf of all of us, just to express our appreciation for looking after us, initiating this, following through on it, and also to encourage you to continue into the future, to draw close to sangha, draw close to support each other in practice, and finding ways to continue to develop and grow. With the blessings of sangha, may you all grow and develop, and may you all experience the fruits of the Buddha's truth. That. Handamayan Dhamma Kathaya Sadhukaram Dadamase. Sadhu, 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 anumodam. Thank you. हमने इसका ट्रांसलेशन नहीं किया, आखिरी पार्ट. आपने कहा कि सबकी तरफ से, लुंग पोर जुंदी की तरफ से, हम आपकी लुंग पोर प्रसन्नो की तरफ से, अजान केवली की तरफ से, अजान मोशे की तरफ से और वेनरेबल गुनाकारा की तरफ से उन्होंने हम साधुवाद दिया. हम लोग बताएं कितने दिन हम रहे हैं. आप लोगों ने बहुत मैत्री से, बहुत प्रेम से, बहुत सजगता से यहाँ हम लोगों का ख्याल रखा. प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम इसी तरह से काम करते रहें, संघ के समीप आएँ, एक दूसरे को साधना में सपोर्ट करें और देखेंगे किस तरह से हम धर्म में आगे प्रगति कर सकते हैं. संघ की प्रेजेंस हो और ब्लेसिंग हो संघ की, ताकि हम सब लोग धर्म के मार्ग के जो फल हैं, शुभ फल हैं भगवान के मार्ग के, वो सब प्राप्त कर सकें. So we're going to be leaving early tomorrow morning. Any last questions? हम तो ये कह रहे हैं कि हम सुबह चले जाएंगे तो कुछ आखिरी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. We'll come over there to see. In the technique, something I heard a lot Ajahn Sumedho mention, just if you could shed some light on it, the kernel reality and the ultimate reality. For the ultimate reality, and what could be a way to, of course there are so many ways that you showed, but yeah, I mean, I think when you speak of conventional reality, it's just this
that which is conditioned, that which is bound up with the world. It's also, it's what we live in when that's the world we have to negotiate. The realm of sight, sound, smells, taste, touch, mental impressions, that's conventional reality. The ultimate reality is to me is the freedom from dukkha. So not making not creating dukkha, not creating a problem. There is as human beings, we have eyes, ears, nose, tongue, body, mind. We experience sight, sound, smell, taste, touch, mental objects, and it usually confuses us. It gets us, keeps us agitated or stirred up, and the teachings of the Buddha, the practices of the Buddha, really give us the opportunity to experience those conventional realities in a way that is not conducive to suffering or dissatisfaction, to dis-ease. So it comes back to those Four Noble Truths. It's not some exalted philosophical sphere that we're trying to obtain. It was seeing things in their true nature, seeing seeing the ordinary with wisdom, and it's a whole different ball game. As the American idiom. It's you realize, oh, I didn't have to make a problem of that. I didn't have to. It was. I think it was maybe with Dr. Dar and Anish. I was using. Bringing up a short teaching of Ajahn Chah's, where he, at his monastery, there are these, around the ordination hall, he was given these stone pillars that are ordination hall or sima stones, boundary markers, and so they're very ancient and they're very large. And at one time, Ajahn Chah was walking with one of the monks and pointed to this huge stone pillar and said, Is that big stone heavy? And he looked, oh yeah, it's really heavy. It's huge. And he said, it isn't if you don't pick it up. If you don't try to pick it up, it's not heavy. So that's conventional reality. Is like, we have to engage with it. It has its function and purpose. But we don't have to pick it up. We don't have to pick up our likes and our dislikes. We don't have to pick up our fears and our anxieties. सत्य के हिसाब से, तो इसका तात्पर्य क्या
है, जिसको हम सामान्य जीवन में समझना पड़ता है, जो कि हमारी इंद्रियों से हमको सूचनाएं मिलती हैं। जैसे आँख से कुछ देखते हैं, शब्द सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, या मन में कोई विचार आता है, वो सब कंडीशन रेलम के हैं। और लुंगपुर कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो अल्टीमेट रियलिटी वही है कि दुख से मुक्ति हो, पूरी तरह दुख से मुक्ति हो। उसके लिए मुख्य बात यही है कि हम जो हमारे इंद्रियों ग्रहित जो फीलिंग्स हैं, जो इंद्रियों से हमारे इम्पैक्ट होता है, उसको हम एक प्रॉब्लम न बनाएं। क्योंकि सामान्यतः ये होता है कि हम कुछ देखते हैं, कुछ सूंघते हैं, कुछ सोचते हैं, वो हमको परेशान करता है, एजिटेट कर देता है, बेचैन कर देता है। और जो परमार्थ सत्य है वो हमको बताता है कि ये ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब अगर हम मेरे हिसाब से आप समझें तो जो परमार्थ सत्य की बात है वो 4 आर्य सत्यों की ही बात है कि किस तरह से हम जो हमारा भासमान सत्य को उसको अनुभव कर सकते हैं, सफरिंग को, दुख को बगैर दुख के पैदा किए उसके ऊपर। ये कोई बहुत एग्जॉल्टेड फिलॉसफी नहीं है, ये समझने की बात है कि हम किस तरह से सामान्य सत्य को बगैर दुख पैदा किए अनुभव कर सकते हैं। या यूँ दूसरे शब्दों में कहें कि जो सामान्य बातें हैं, जो मंडेन है, ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, उसको किस तरह से प्रज्ञा से देख सकते हैं। हमें किसी भी अनुभव को एक प्रॉब्लम बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक दृष्टांत भंते जी ने दिया कि जो वाट पा पोंग है, वहाँ पे जब ऑर्डिनेशन हॉल बना, उसके ऊपर 4 जो सीमा धारण करने के पत्थर लगाए जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े रॉक्स थी, शिलाएँ थी वहाँ पे, जो बाउंड्री मार्क का काम कर रही थी, बड़े एंशिएंट शिलाएँ हैं। तो जब एक बार वो एक भिक्षु के साथ वहाँ टहल रहे थे, उसने अजान चा ने उनसे पूछा, ये जो सीमा मार्कर हैं तो भारी हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, तो इतने बड़े हैं, बहुत भारी हैं। तो अजान चा ने जवाब दिया कि अगर आप इसको उठाना नहीं चाहो तो भारी नहीं है ये। तो ये एक बड़ी रिलेशन की बात है, समझने की बात है कि कन्वेंशनल रियलिटी में तो वो चीज़ भारी है, लेकिन क्यों हम उसको अगर नहीं उठाना चाहते, उसको समझते हैं कि उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें कोई भार नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम जो चीज़ें हमारी इंद्रियों पे आती हैं, इंद्रियों से ग्रहित होती हैं, अगर हम उनको उठा के उनके साथ चिपकाव ना करें तो दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। जो हमारे भय हैं, जो एंग्जाइटीज़ हैं, अगर हम उनको उठाएं ना, उसको जस्ट देख लें, तो अल्टीमेट रियलिटी की तरफ, एक परमार्थ सत्य की तरफ हमारे को ले जाती है। So in Buddhism there is a lot of emphasis on past lives, yesterday during one of the discourse also there was a mention that some people are born with accumulation of past merit and have a more comfortable life, while others, and there comes in this thing about having to believe. And my question is, for the period that you've been associated, finally have you been able to see yours or other people's past lives, or found a way for them to kind of verify it, to believe or to give it up? I mean, I personally don't feel it is so essential towards meditation or self-purification or following the path, but it tends to be one thing that seems to be very easily questioned, and it somehow does not gel with the scientific temper, or said differently, it tends to be something which may be misused by someone who claims to know someone's past lives to guide him in a way that is manipulative and yeah, that's a real danger. And Ajahn Chah, I really appreciated Ajahn Chah's approach, because he didn't it wasn't central to his teaching, and certainly all of the, actually the Buddha himself, it's not that he didn't speak about past lives, but he didn't use because it can, for those who don't have
knowledge of their teaching mostly is set up so that it's verifiable here and now, and that so that for myself, I don't have any personal knowledge of my own past lives. I don't have knowledge of other people's past lives. But through my own practice and study, then I don't discount it. But it's not central to my need to it's something that is you can verify the efficacy of the teachings without it. If one had insight into it, then I think it would be even more confirming. But the reality is most people don't. I mean, even Sariputta didn't have psychic powers. Hey, I'm a pretty good meditator. So that and certainly these aspects of things that are whether it's past lives or future or other realms of existence, those are things that I don't discount, but I don't have a direct knowledge myself. And that brings me to the next point, that in spite of such a rich heritage of knowledge and people having devoted. Okay, am I audible? All right, thanks, thank you. Yeah. So now the question is, with such a rich heritage and with the noble path being laid out and people having put in so many years of discipline, one comes to the question of effectiveness of having someone else in the several thousand years show up as a Buddha. I mean, do we? So please, excuse my ignorance, but have you come across people, or do you know of people who have attained the same level as Buddha himself? I would say so. Yeah, because one thing is when the Buddha speaks of attainment, because there's the attainment of arahantship, of purity, and the Buddha said even a layperson who has attained arahantship on this day has the same purity of mind as himself, because it's a freedom from defilement, it's a freedom from suffering. That is the same. What is different is, say, accumulated, say, barmi, capacities, abilities to express or have avenues of knowledge. Those are different. But the actual purity of the mind of somebody who has liberated the heart, the Buddha is very categorical. It is the same. What is different is more on how it's displayed in terms of personality, temperament, capabilities. But those are all, that happens anyway. Yeah. प्रश्न पूछा गया कि टीचिंग में ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म पे काफ़ी एम्फेसिस होती है, और कल भी कहा गया था कि कुछ लोग जो हैं पिछले जन्मों के कर्मों के एक्यूमुलेशन से पैदा होते हैं, तो इसलिए कुछ लोग अच्छी परिस्थिति में पैदा होते हैं, कुछ लोग दुखद परिस्थिति में पैदा होते हैं।
लेकिन ऐसी ये चीज़ ऐसी लगती है जिसको हम प्रश्न कर सकते हैं, और ये कुछ लोग इस बात को, अगर उनमें ऐसी पावर है कि पिछले जन्म को देख सकें, तो उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो आपने उत्तर दिया कि हाँ, संभावना तो है, लेकिन जहाँ तक अजान चाह की टीचिंग की बात है, उन्होंने इसको अपनी शिक्षा का सेंट्रल पार्ट नहीं बनाया, और इसके बारे में जो है भगवान बुद्ध ने सच बात तो कही है पिछले जन्म के बारे में, लेकिन उसको अपनी टीचिंग का फंडामेंटल पॉइंट नहीं बनाया था, क्योंकि जिनके पास ऐसी शक्ति नहीं है उनको तो इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और भगवान की टीचिंग तो हमेशा वो कहते हैं ये वेरीफाइबल हेयर एंड नाउ, यहाँ पे वेरीफाई करनी हो सकती है, तो ये इसलिए इस बात को सेंट्रल पार्ट नहीं बनाया। फिर बंते जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि मेरे में कोई ऐसी पिछले जन्मों की जानकारी नहीं है अपने बारे में या किसी और के बारे में, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस के आधार पे, अपनी स्टडी के आधार पे इस बात को झुठलाता नहीं हूँ कि ये सब गलत है, ये कुछ तो है, लेकिन इस बात की जो चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि जो टीचिंग है उसकी हम एफिकेसी को वेरीफाई कर सकते हैं, और हम साधना करके सत्य के बारे में अपना इंसाइट डेवलप कर सकते हैं। इस जहाँ तक साइकिक पावर का या पिछले जन्मों की बात है, तो उन्होंने लुंगपुर ने दृष्टांत दिया कि जो सारिपुत्र थे, जो इतने बहुत भगवान के प्रमुख शिष्य माने जाते थे, उनमें भी साइकिक पावर्स इस तरह की नहीं थी, और हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे साधक नहीं थे। तो ये, और इसी तरह से दूसरी बात आपने फिर कही कि जैसे डिफरेंट दूसरे आयाम, दूसरे लोक बताए जाते हैं, देवलोक और अन्य लोक की बात होती है, तो ये बातें मैं डायरेक्ट अनुभव से नहीं कहता कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनको झुठलाता भी नहीं हूँ, आई डोंट डिस्काउंट देम। और फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि उसको प्रत्युत्तर एक और प्रश्न पूछा, क्या इतने वर्षों में आपने किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो सचमुच में वही क्षमता हो जिसकी जो भगवान बुद्ध की थी? तो आप बंते जी ने समझाया कि हाँ, मैं डेफिनेटली ऐसे लोगों से मिले हैं हम, और क्योंकि वो अरहंतशिप की बात करते हैं, और भगवान ने खुद कहा है कि जो अरहंत हैं उनका उसी लेवल की प्योरिटी है, मन की शुद्धता वैसी है जैसी मेरी है। तो क्योंकि जो मुक्ति की बात है उसका मतलब है कि विकारों से मुक्ति हो गई है, और वो विकारों से मुक्ति सब एक है। जो फ़र्क है वो दूसरी चीज़ों में है, कितनी उनकी संचित पारमियाँ हैं, उसके कारण कितनी एबिलिटीज़ हैं, धर्म सिखाने की कितनी एबिलिटी है, साइकिक पावर की कितनी एबिलिटी है, ये सब डिफरेंट होता है। लेकिन जहाँ तक चित्त शुद्ध की बात है, वो अरहंत में और बुद्ध में एक ही जैसी है। और उन्होंने कहा कि हाँ, अरहंत हम ऐसा मैंने कह सकता हूँ कि हाँ है, ऐसे अरहंत हैं, ऐसे समझिए। Sir, there are two questions which came online. One came in last session, and the question was that when I am in my office, I drink a lot of tea, and how can mindfulness help me in that? Is that a problem? If he takes 20 cups, it would become a problem. To me, it's not. What else do you do? I'm not quite sure how to answer that. To me, it's not. It's just pretty straightforward. We get through our lives in different ways. मैं रहता हूँ तो बहुत जल्दी चाय पीता हूँ, क्या सजगता से कुछ इसमें मदद मिल सकती है? तो बंते जी कहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती। हर आदमी अपने अपने तरह से संसार जीवन जीता है। Probably I can share my personal experience, and then possibly if you can. So I think what happens is that whenever there is a moment of stress in the office and you want to escape from a situation,
then you head for the pantry area and try to drink a cup of coffee or tea, and then you feel that possibly you have some energy, and then you come back to work, and then suddenly you feel that there are a lot of things happening and you're not able to cope with it, and then you again go back and pick another cup. Yeah, I mean, a lot of it is that, I mean, sometimes it can be a crutch, but I mean, it's also the reality is it's pretty innocent. That's, and a lot of it is just being willing to pay attention to what the mind is doing, and it's also sometimes we come, we pick up the Dhamma in a almost like a puritanical way, that you can't have any pleasure whatsoever. And there's the precepts, and there's compulsiveness, and there's crutches that we rely on, but and just really paying attention to where is there a balance there, and because we can torture ourselves with trying to be too pure. I mean, in the sense that sometimes, just these precious Buddhist meditators can be really irritating. I should watch what I say. It's all being recorded. तो दीपक जी ने उस प्रश्न में कुछ अपना अनुभव ही जोड़ा कि जब भी ऑफिस में किसी बात से स्ट्रेस होता है तो हम पेंट्री जाके एक कप कॉफ़ी ले लेते हैं और पीते हैं, फिर काम पे आ गए, थोड़ी देर बाद फिर कोई और लगा गड़बड़ हो रही है, फिर जाके एक और कप पी लिया। तो बता रहे हैं कि वो एक परेशानी का वजह बन सकता है। तो भंते जी ने उत्तर दिया कि कभी कभी एक मजबूरी, एक ऑब्सेसिव आदत सी बन जाती है, तो लेकिन अगर ये एक सामान्य बात सी देखी जाए, इट्स अ प्रेटी इनोसेंट काइंड ऑफ हैबिट, लेकिन अगर हम इसको ध्यान दें इस बात पे, अपने मन की स्थिति पे जो हमको इस ओर ले जा रही है, तो समझ जाएंगे कि वो किस भाव से प्रेरित हो रही है। इज इट जस्ट ए इनोसेंट विश? और तो उस बारे में वो कह रहे हैं कि कभी कभी लोग धर्म की और साधना को बड़ी प्योरिटिकल, एकदम शुद्धता के हिसाब से देखने लगते हैं और समझते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने का मतलब है कि कोई भी हमें प्लेजर, कोई भी सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक प्रीसेप्ट्स का सवाल है, उनके प्रति तो कंपल्शन है, उनके प्रति हमको पूरी सजगता से काम करना है, लेकिन सामान्य जीवन के लिए कुछ ना कुछ सहारे लोग लेते हैं, तो जब तक उसमें बैलेंस बना रहे उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं लगती। हाँ, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि साधक जो है अपने आप को अधिक प्यूरिटेनिकल एटीट्यूड से, शुद्धता के एटीट्यूड की मैं बहुत शुद्ध रहूँगा, अपने आप को काफ़ी टॉर्चर कर देते हैं। और कई बार तो साधक जो है, प्यूरिटेनिकल साधक, बड़े इरिटेटिंग से भी लगते हैं। Have a break. Come back and have a bit of sitting quiet time.
invitation for our tonight.